लेना चाहते हैं? Give me a quick thumbs up. Please write in the chat box. Thank you so much with a huge amount of thumbs up and yeses. So please switch on your cameras. It would be nice to talk to somebody across rather than just the blackboard. Thank you so much. Ramesh Kumar sir, KK, Lalita ma'am, Sonia ma'am, can we have the cameras on? सब लोग अपना virtual seats ले लें. For next 1.5 hours, try to focus on the webinar so you'll get to know more about how the human system works and how you can improve your quality of life. तो कितने जन ये जानने के लिए उत्सुक हैं that how you can work on your body just through your breath so that you can come out of your current health problems and improve your quality of life. How many of us are interested to know that? Okay, Deepak Chaudhary, sir, is everybody getting an echo? किसी को echo आ रहा है क्या? Okay. Sir, you need to log out and log in again. Okay. So Rajeshri ma'am does not want to know how the human system works and is it? Okay. So no echo. So there is no echo. जिसको भी echo आ रहा है, please log out करके log in करें. So just give me 2 minutes. I will be sharing the screen so that you get to know more about how to take charge of your health and work on your body to improve your quality of life. Thank you so much. Is the screen visible? Can I get a quick thumbs up? Thank you so much. Ashtang Chikitsa, online therapy for neuromusculoskeletal problems. Some aches and pains which could be related to some musculoskeletal issues or the neurodegeneration. So these are the things we will be covering in today's webinar. So now let's see how can we work on our body. So namaskar. I welcome you all to the Ashtang Chikitsa webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems that you or someone in your family may be suffering from, but have not yet found permanent relief despite spending a good amount of money on various treatments. Ashtang Chikitsa can also be used as a preventive method so that you keep your internal organs functioning at their optimum levels. So now I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi. Swami Raj Vibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He has taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer.
So at Avilsa Healing and Fitness, let's see what is our vision and mission. So we are trying to revive Ashtang Chikitsa to address the structural issues of a human being. तो हम क्या बताना चाहते हैं when we say the structural issues of a human being? The musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way. That's our purpose at Avisa Healing and Fitness, a profound way of addressing the aspects of a human body. Now let's come to the very, very important question. Who is this webinar for? For people who are tired of temporary treatments and are looking for a natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. Reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtang Chikitsa, freedom from pain and medicine. So Swamiji will talk about the Ashta Sharir or the 8 softwares in the body. Shrishti Sharir, Garbha Sharir, Dosha Sharir, Marma Sharir, Pramana Sharir, Sankhya Sharir, Prakriti and the Vikriti Sharir. Ashtang Chikitsa can heal. Of course, these are the most common problems that we come across daily across the participants, be it any age group, which used to be the problem of the retired people, today is seen among the youngsters. So knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine-related issue, slip disc, disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder, drooping shoulder, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy or the nerve issue. So कुछ चीजें आप ऐसे देख रहे होंगे जो स्पेशली महिलाओं को post 50 or post menopause, the problems are very, very evident. For example, osteoarthritis, osteoporosis, sometimes lower back pain, knee pain. So what happens? The degeneration is at a faster pace than the regeneration. तो अष्टांग चिकित्सा में हम वो बैलेंस करते हैं, यानी कि the regeneration is worked upon so that the degeneration, which is inevitable for all human beings, is balanced out. So let's look at some more chronic problems जो आज के लोग फेस कर रहे हैं. Muscular dystrophy, multiple sclerosis, TMJ disorder, varicose veins, psoriatic arthritis, Ehlers-Danlos syndrome, spinal stenosis, myasthenia gravis, Bell's palsy, cervical spondylosis, carpal tunnel syndrome, ataxia, Guillain-Barré syndrome, AVN, Alzheimer's disease, dementia, glaucoma, vertigo, ankylosing spondylitis. तो इसमें बहुत सारे ऐसे disorders हैं which are autoimmune disorders. So देखते हैं आखिर स्वामी जी क्या solution बताते हैं in autoimmune disorders which is growing at a faster pace. So let's hear from Swami Raj Vibhuji solutions to our current problems and how you can come out of your present health issues. Thank you so much for listening to me patiently. Now I would just tell you how we are going to proceed in the webinar. You will be hearing the recorded video of Swami Raj Vibhuji, in which you will be understanding how the body works and how you can come out of your current problems. After that, we will be inviting somebody live who has been a participant, and he or she will be sharing the journey of Ashtang Chikitsa
Of course, we will be sharing the program details soon after that. And definitely, we will be taking up all your questions related to health, which will be discussed with Swamiji himself, who will be joining us live in the fag end of the webinar. तो लिख डालिए आपके प्रॉब्लम्स जो आपको परेशान कर रहे हैं along with your name and number. Thank you so much for listening to me patiently. Over to Anilji to share the video. So let's start. Neuromusculoskeletal problem. We are talking about neuromusculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था. रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली. डीजनरेशन इज हैपनिंग. दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी. लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है. The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो कहेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो. And he would try to see the problem there itself. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. But do you know why inflammation happen in your body? Why inflammation? Inflammation क्यों होता है? सूजन क्यों हो जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहां पे आपके जॉइंट में? प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now Rachana ji said after menopause osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance.
हार्मोन इम्बैलेंस होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, लोअर बैक पेन एंड योर नी पेन कैन हैपन. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर ब्रिटल हो गई, कमजोर हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. If they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtanga चिकित्सा. Now in the last 50 years, पिछले 50 साल 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें जरा. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस स्केल में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtanga Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, in कुंभक कलाचार और आयुर्वेद कलाचार, in yoga कलाचार, there is nothing called as mind separately. It's always Sharira. Both body and mind complex is called as Sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. Let's take example. Open your mouth and try to think. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as prakriti, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए.
Now I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं, ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ज्यादा छोड़ते हैं. आप लेना नहीं चाहते हो. योर बॉडी डजंट वांट टू. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. यू डोंट टेक इन, यू ट्राई टू एक्सहेल मोर. इफ यू गेट टायर्ड, अगर आप थक जाते हैं, व्हाट इज टायर्डनेस? थकना क्या हुआ? लॉट ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी, इजंट इट? व्हाट डू यू डू? यू डू लॉन्ग एक्सहेलेशन. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही situation मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है. More exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी humanity. I'm just talking about humanity. I'm just saying it in that way. हमने क्या किया वातावरण का? खराब कर दिया. Do you think your body wants to inhale more or exhale more? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? क्या करते हैं देखो ये पढ़ो. Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बन तो रहे नहीं. आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता. कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है. It doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more. And correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. So ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, there is no chance of recovery. So what are you doing to create a balance of these two things? You are not doing anything. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? First of all, so this is the first thing that we need to get to: a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do you do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो. See a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold. It is the hold of senses also.
आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ऑल द 5 senses, you hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप डिजेनरेशन स्टॉप नहीं कर सकते. दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ लाइफ. यू विल एज, बट यू मस्ट एज ग्रेसफुली. ठीक है, तो हाउ टू बैलेंस विकृति? देयर इज अ मेथड टू बैलेंस विकृति. अष्टांग चिकित्सा विल गिव यू दैट मेथड टू एनहांस प्रकृति एंड बैलेंस द विकृति. सो देन नेक्स्ट थिंग, व्हेन देयर इज अ रीजनरेशन, कोई नई चीज पैदा हो रही है, सो इट विल एक्सपैंड, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. सपोज योर वन हैंड बिकम्स लॉन्ग, द अदर हैंड रिमेन्स शॉर्ट. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. विल यू गेट जॉइंट प्रॉब्लम इन वन ऑफ द शोल्डर्स? आपको एक शोल्डर में जॉइंट प्रॉब्लम आएगी ना. सो इफ यू हैव वन लेग अ लिटिल लॉन्गर देन द अदर लेग, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, यू विल गेट नी पेन इन वन लेग. आपके एक पांव में नी पेन होगा. यू विल गेट हिप पेन एट वन साइड ऑफ द हिप. इफ योर बॉडी इज नॉट अलाइंड, द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड इज नॉट अलाइंड, you will get a problem. न्यूरो स्केलेटल प्रॉब्लम. अगर आपकी एक मसल्स खिंच गए बिकॉज ऑफ अनइवन एक्सपेंशन, स्किन ढीली हो जाती है ना. स्किन बिकम्स फ्लैबी व्हेन देयर इज एन अनइवन एक्सपेंशन. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. एट मसल्स, एट जॉइंट्स, आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है. मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. So disalignment, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a backrest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. 3 basic disalignment है. नाभि, your navel can get disaligned, we call it dharan. Your chest can get disaligned, आपकी छाती डिसलाइन हो सकती है, that part is called as kaudi. And your legs can get disaligned, आपके जांघें डिसलाइन हो सकती है, that is called as nale in the local terminology. Nabhi, kaudi, nale. Now, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा है ना. आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा है. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel, but nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of kaudi or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, let's see how do we balance. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट. खींचने की कोशिश करें, जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. व्हेन यू पुल, व्हाट यू डू? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ, यस और नो? सांस रोकी आपने?
even if you have to align yourself. What is the basic key? वो कुंजी क्या है, वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtanga Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है, वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go. Let's go to the third part, Pramana. Now, one more thing in Sankhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest. अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, प्रमाण शरीर, प्रकृति, विकृति, संख्या, प्रमाण. चौथे पे आ गए हम, प्रमाण. प्रमाण means density. इसका मतलब होता है डेंसिटी, गुरुत्व, भार, डेंसिटी. इसी को धातु भी कहते हैं. वी कॉल इट धातु. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू इन योर बॉडी, इजंट इट? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. लाइक बोन इज वेरी मच डेंस. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. योर मसल्स इज लेस डेंसर देन योर बोन. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, your fat muscle, your fat tissue or adipose tissue is very light compared to the muscles and bones. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. People who have denser bones and muscles, their weight is high even though they are lean. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as सप्त धातु. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के टिश्यूज हैं. If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs हैं, हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, ये जितने भी ऑर्गन्स है ना, इनको काम करने के लिए देयर इज अ डेंसिटी रिक्वायर्ड. सो वी आर लूजिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ आवर ऑर्गन. हमारी ऑर्गन वीक हो रही है. व्हाट इज डायबिटीज? योर पैनक्रियाज इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, योर लिवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. व्हाट इज हाइपोथायराइड? योर थायराइड ग्लैंड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, है ना? इट हैज ऑल्सो रिलेशन विथ लिवर. व्हाट इज किडनी डिजीज? योर किडनी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. ऑर्गन डैमेज आजकल ज्यादा है. यू विल सी मोर क्रॉनिक डिजीज आर देयर, है ना? ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज. सो हाउ डू यू करेक्ट योर ऑर्गन? सपोज देयर इज अ जॉइंट पेन ड्यू टू लिवर डिसफंक्शन. लिवर के कारण आपके शरीर में जॉइंट पेन है, इन्फ्लेमेशन. सो यू विल हैव टू करेक्ट द लिवर. आपको लिवर ठीक करना पड़ेगा. इज देयर अ मेडिसिन टू करेक्ट लिवर? नो, देयर इज नो मेडिसिन टू रिजुवेनेट योर ऑर्गन. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देयर इज नो मेडिसिन. देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, इजंट इट? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुवेनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें. नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. Make a fist from the right hand. Keep your left palm like this and try to push your left palm very hard. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए.
हाउ डू यू क्रिएट दिस स्ट्रेंथ ऑफ पुशिंग? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ, यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ बिहाइंड. करके देखिए दोबारा, अगेन डू इट अगेन, सी, पुश इट हार्ड. यू होल्ड योर ब्रेथ, सांस रोकते हैं आप, बट सांस रोक के बाय होल्डिंग द ब्रेथ वेयर आर यू क्रिएटिंग द ट्रिगर? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, कोई भार आप उठाते हैं, so how do you lift weight? वेट कैसे लिफ्ट करते हैं? You hold your breath. You can't lift weight without holding your breath. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से वेट उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको. तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally. योर हार्ट रेट विल इंक्रीज. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. यू स्टार्ट स्वेटिंग आफ्टर सम टाइम, पसीना आ जाएगा. वेयर डिड द ट्रिगर गो? इनसाइड. सो बाय ब्रेथ होल्ड यू कैन क्रिएट एन इंटरनल ट्रिगर. कैन यू डायरेक्ट इट टुवर्ड्स योर हार्ट, टुवर्ड्स योर लिवर, टुवर्ड्स योर किडनी, टुवर्ड्स योर थायराइड, टुवर्ड्स द अदर ऑर्गन एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए, हाउ यू मेड वन हैंड मोर स्ट्रॉन्गर देन द अदर. एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? बिकॉज यू वर्क विद दैट हैंड मोर, इजंट इट? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. एंड हाउ डिड यू वर्क? ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन, ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन. दैट हैंड बिकेम स्ट्रॉन्ग. सो इफ यू डू ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन इनसाइड, दैट ऑर्गन विल बिकम स्ट्रॉन्ग. दिस इज द ओनली वे. देयर इज नो अदर वे. So how you can rejuvenate your liver, how you can make your liver strong, how you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtanga Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you. For youngsters also, छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की movement होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. ऑर्गन आपकी आंतों के बीच में, लंग्स, ऑर्गन्स एंड द एक्सटर्नल बॉडी इज कनेक्टेड. ये सब जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो जंक्शन पॉइंट है, दिस जंक्शन पॉइंट ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज मर्मा. इफ दिस जंक्शन पॉइंट इज ओके, lubricated एंड फ्लेक्सिबल, यू कैन परफॉर्म बेटर. अगर ये जंक्शन पॉइंट ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक मूवमेंट ठीक से होगा. योर ऑर्गन फंक्शन विल हैपन प्रॉपर्ली. सो दीज आर कॉल्ड मर्मर्स. सो मर्मर नीड्स अ कांस्टेंट रिजुवेनेशन. इनको कॉन्स्टेंटली एक तरीके से मूवमेंट देना पड़ता है. टू कीप इट फाइन, वी नीड टू एक्चुअली make them move in a particular way constantly.
For example, I'm giving you another example. If your marmas are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का movement का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it. There are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे खटकाते हैं तो आवाज आती है ना? If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना? क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक heart है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be प्रकृति, new cellular form, better cellular formation. अगर वो environment ठीक नहीं होगा, तो wrong cellular formation called, and this is called as cancer. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. So because of an internal environment, cancer happens because of a cancerous environment. और उसके लिए, if you want to come out of that, then there should be constant rejuvenation of marma. तो इसमें हम मर्म अष्टांग चिकित्सा में, there is a part in अष्टांग चिकित्सा, there is a part called as anganyasa and marma vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtanga Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. So function, there are three things which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी. Material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. This you must have heard of. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of these words called vata, pitta, kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, kapha, pitta, vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? Movement को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? What is vata? Movement. Vata also creates pain. So movement, how do you control movement? If you want to move your hand, how do you control the movement? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाएं, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए. How do you control this movement? By holding your breath in a particular manner. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. Yes or no? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it's little temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice kumbhak. कोई और चारा है नहीं. So dosha sharir ko, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak.
Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do Vata Pitta Kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure, rejuvenation. If you do Kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So, neuro problem, usually, कहते हैं neuro problem, somebody was talking about, so, what people were talking about? Spondylitis and what else? Neuro problem. Now, something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. Huh? There is neurodegeneration, degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't, no, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 64-year-old, 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing Kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There was a marathon. There is a marathon runner. She's a lady, a lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, uska marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing Kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started Kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started Kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done Kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis and neuropathy. You can actually revive, your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part or the 7th Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma.
When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now burst, is now being bursted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People of who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? ग्रेविटी तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे ग्रेविटी के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. Gravity के opposite force लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा फील होगा? How will you feel in your body and mind? You'll feel heavy, pulled by gravity. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. You'll not feel light. How will you feel? Heavy. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे heavy feel करेंगे. Where will the heaviness impact? ये heaviness कहां असर करेगा आपके? Joint पे? It will impact the joint? Yes or no? This heaviness is called as stress, S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान ही कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root उदाना. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग-अलग forces में आप काम करते हैं. Your organs function according to these forces.
So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा फोर्स वीक हो गया जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए? That is what we diagnose in प्राण शक्ति diagnosis. यही प्राण शक्ति diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do prana shakti diagnosis, and in the 9 weeks you learn the basic module, and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as अंगन्यास. The second one is called as hatha vinyasa. The third one is called as kumbhak therapy. So in 9 weeks you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtanga Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you'll not get a magic pill. कोई magic दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self-corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important. Wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई? वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. हाँ? So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you so much for listening to Swamiji patiently. Now I would like to invite Chetna ma'am. I think she has already joined, who's been a part of Ashtanga Chikitsa, to share her journey. Chetna ma'am, am I audible to you? Yeah. Thank you Yes. so much for joining us tonight. Okay. Can we have Chetna ma'am on spotlight, please? Yeah. See, I would like to tell, first of all, Pranam Swamiji and all the team. In January, I had a very bad attack of sciatica. I was not able to walk even 10 steps without pain. Even if I walk, I had to sit and then walk. It was horrible situation. And then in February, I joined Kumbhak with Swamiji. And by February, March and April, I was almost 90% fine. I'm not telling I'm that normal, but 90% is a big thing
big thing. So I would like everybody to join this for your best health, and they are the best people. There is no medicine required afterwards. So I would say thank you so much, everyone, to join for this. Please do that. Thank you so much, Chetna ji, to share Thank your you. journey of Ashtang Chikitsa. Now we will be sharing the program details. So over to Anil ji to share the program details. Thank you so much. Okay, thank you, Rachna ji. Are you able to hear me? Yes. Okay, let me share my screen and let me know if you are able to see it. Is my screen visible? Yes. Okay. All right. Namaskar, everyone. So a lot of you may be waiting for the program details. When are the classes? What are the timings? And the most important part, what is the fee? This is the part that people wait till the end. So let's get to know, because we'll be having Swamiji live with us at 7:30 to answer all your questions. First of all, this is a guided program which is conducted online on the Zoom app by trained कुंभक mentors. ये एक guided program है जो experts की supervision के अंदर conduct किया जाता है, और जो instructors होंगे वो कुंभक mentors हैं, स्वामी जी द्वारा trained हैं, right? That is the first thing. Program modules, there are 3 modules in the program, as Swami ji also mentioned in the video. इस प्रोग्राम में 3 मॉड्यूल्स है, वात, पित्त एंड कफ मॉड्यूल. इसके बारे में डिटेल में थोड़ी देर में और बात करेंगे. विल अंडरस्टैंड a bit in detail also after some time. Duration of each module is 21 days or 3 weeks. So total duration of the program becomes 3 modules into 3 weeks, 9 weeks. टोटल 9 हफ्ते की ड्यूरेशन का ये प्रोग्राम रहेगा. But you see here, I've written 9 plus 1. Why 1 week extra? You'll get to know in a short while. There'll be 2 live classes every week, out of which one will be the learning class or the main class and or the practice class. हर हफ्ते 2 live classes रहेंगी, एक learning class या main class और दूसरी कहलाती है mentoring या practice class. Next steps. You pay the program fee, and there's a special webinar pricing for people who have attended the webinar till the end. After that, you'll be filling up the participant onboarding form, which Neha from our team will be sending you. And then third step is to start your classes, starting with module 1. पहला जो मॉड्यूल है, वात मॉड्यूल के साथ ये पूरा आप कोर्स स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, right? Now, Module 1 or Vath module has 6 classes. Module 2 or Pith module has 6 classes, and then Kaph module also has 6 classes. So total 18 classes. But if you see closely, I have written one customization class. What is this customization? ये customization class क्या है जो 18 class के बाद होगी, ये थोड़ी देर में हम समझें. Batch 132 is starting on 29th May, which is a Monday at 7 p.m. हमारा 132वां बैच 29 मई को शुरू हो रहा है, जो कि सोमवार का दिन है. 7 बजे शाम को ये शुरू होने वाला है. मेंटर क्लासेस या प्रैक्टिस क्लासेस वो तीसरे दिन होती हैं. ये सभी डिटेल्स हम शेयर करेंगे व्हाट्सएप चैट में और जूम चैट के ऊपर अभी, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. What is the class experience like? क्लास का पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है? These are live sessions, as you must have understood by now. Mentors watch all the participants and they'll be giving you feedback and correcting you there and there. ये लाइव सेशंस होते हैं और हमारे मेंटर्स आपको आपके कैमरा पर देखते हैं, इसलिए कैमरा ऑन रखना कंपल्सरी होता है, बिकॉज ये ऑनलाइन सेशन है. देन यू गेट रिटन इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश एंड हिंदी. आपको लिखित निर्देश भी मिलते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, और सेशन रिकॉर्डिंग या क्लास रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल कराई जाती है, राइट? Then there'll be a lot of extra things like mental practices, unique diet perspective. Mind you, this is not a diet plan. There's no diet plan. You'll get a video from Swamiji in which he'll be telling a lot of
things about food as to how to use food in a way it does not harm your body. जो खाना है वो आपको किस तरीके से खाना है, ये डाइट प्लान नहीं होता है, बिकॉज डाइट प्लान काम नहीं करते हैं, सभी का शरीर अलग अलग होता है, तो सेम डाइट प्लान सभी के ऊपर काम नहीं करता है, राइट। तो एक डाइट पर्सपेक्टिव मिलता है, खाने की बेसिक्स क्या है जो हमें शायद मालूम ना हो, वो आपको बताया जाता है। देन देयर विल बी सिंपल डिटॉक्स प्रोसेसेस एंड अ लॉट ऑफ नॉलेज विल बी शेयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम। काफी आपके साथ और बहुत सारी चीजें शेयर की जाएंगी आपकी हेल्थ के बारे में। Now, before I come to the fee of the program, I'll just like to bring your attention to the yearly expenses that we may already be doing to manage the problem that we are into. आपको ध्यान थोड़ा बताना इधर आकर्षित करना चाहूंगा, जिस तरीके का हम खर्चा शायद कर रहे होंगे अपनी बीमारी को मैनेज करने के लिए। माइंड दिस इज मैनेजमेंट, नॉट अ permanent solution. Doctor fee, we could be already paying 6,000 to 12,000 every year for doctor visits, their consultancy. If you are into physiotherapy, there could be 12,000 to 30,000 going into that also, and medicines could be costing 15,000 to 30,000. Total 33,000 to 72,000 you could already be spending just to manage the problems that you are into. Why I'm sharing is this, because we as human beings we like to compare things. So it's important to know what you are getting for the kind of fee that you'll be paying and what you all are already spending without getting much relief in your problems. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. And it's also important to know who this program is not for. ये जानना भी जरूरी है कि ये किन लोगों के लिए प्रोग्राम नहीं है, ताकि ये क्लियर हो सके किन लोगों के लिए ये एक्चुअली है. This program is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow only. Swamiji also talks about it a lot, about the magic pill. Why? Because right from the childhood, we have been put into this habit of popping a pill whenever even a small cough or cold happens to any child in the family. If you also look around, you may also be, some of you may already be doing it to your children in the family. जैसे ही कोई जुकाम खांसी होता है, एक तुरंत एक गोली दवाई या सिरप उनको पिला देते हैं. सो एक आदत बन चुकी है, कोई बीमारी यानी कि कोई दवाई लेनी है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स एलोपैथिक मेडिसिन ओनली. तो आदत बन चुकी है, इसलिए ये कहना जरूरी है, ऐसा इस थेरेपी में कुछ नहीं है. और क्योंकि हमें एलोपैथी में एकदम आराम मिलता है थोड़े टाइम के लिए, चाहे टेम्पररी हो, तो हम ये समझते हैं कोई भी थेरेपी हम करेंगे तो तुरंत थोड़ा आराम मिलेगा. तो ये ऐसा हो जरूरी नहीं है कि इस थेरेपी में हो. सब कुछ लोगों के साथ होता है तो उनको रिजल्ट्स एकदम से मिलता है, एक बार करने में मिलता है, बट दैट इज नॉट ट्रू फॉर एवरीवन. तो इसलिए क्लियर करना जरूरी था. And this is not for those who are not ready to work on their body, because you will be needing 80 to 90 minutes every day to do your kriyas. Initially, it will take you longer, क्योंकि ये क्रियाएं आपके लिए नहीं होंगी, इसलिए आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है स्टार्टिंग में. As you keep on doing your practices daily, you'll get used to the kriyas, you'll be remembering and you'll be learning all the kriyas, so that after that it will take maybe 40 to 50 minutes every day. And this is not for those who are impatient. We understand when you're into pain, when you're into a disease, the patience goes down, but still we wanted to make it very clear. Please be patient. And this is not for those who are looking for a free treatment or just some tips. I'd like to stop here and discuss this point a bit more than the other points. Why? Because most of you must have come to this webinar after seeing an ad on Facebook which said that there's a free introductory webinar. Now, many people misunderstand as that the therapy announced the fee. Sometimes they shout at us that why we are charging when we have advertised that it's free. The webinar that you are attending is free because it's an introduction to Kumbhak therapy. So that's why it's free. Now the 9 weeks program, because it has to be done under supervision, so that is not free. So wanted to make this point very clear so that you do not ask and don't get confused later on. And this is also not for people who are just looking for some tips.
lot of people attend lot of webinars, not just this webinar, they'll be attending lot of webinars to see if they can pick up some tips. See, if you are looking for a solution, a permanent solution, then it doesn't happen through tips. You have to start from zero, and you have to start the program and take it the whole program till the end. That, see, had your problems, had anyone's problems could be solved through tips, then there are thousands and thousands of videos on YouTube. So, but that is not happening, right? So it's not for those who are looking for some tips, right? Because it's a holistic way of treatment, and we do a lot of things. We analyze your body. I'll talk about the Pran Shakti diagnosis and everything. So wanted to make this point very clear, right? Now, what all you get in the program? First point is Pran Shakti diagnosis for root cause determination. This alone in itself could be worth the whole fee of the program. Why? Because through Pran Shakti diagnosis, Swami Ji is able to determine the root cause. बीमारी की जड़ क्या है? स्वामी जी इस प्राण शक्ति डायग्नोसिस से वो चीज पता कर पाते हैं. अब थोड़ा इसको और समझते हैं. First of all, this is a non-medical diagnosis and this is an online diagnosis. Now, both things may sound very strange to you because from childhood, we've been used to visiting a doctor, going to a diagnostic center, getting something taken out of a body, be it urine, be it blood or whatever, or some machine is measuring something. So this is none of that. This is a unique diagnosis and the only diagnosis of its kind on the whole planet. Let's discuss more. ये होता कैसे है? How does it happen? You'll get a link to a form in which you'll be asked to do some experiments on your breath and emotions. आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा और आपको अपनी सांस के ऊपर, ब्रेथ और इमोशंस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने को कहा जाएगा और वो आपको नोट करना होगा इस फॉर्म के अंदर. You have to record whatever the results of the experiments that you get in the form. Second thing that you'll be doing is you'll be writing about your problem in great detail in this form. दूसरी जो चीज आप करेंगे इस प्राण शक्ति डायग्नोसिस के लिए, आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में लिखेंगे इस फॉर्म के अंदर. The third and the last thing that you'll be doing is you'll be uploading a selfie photograph, shoulder and above, in which the face should be clearly visible, and in case of ladies, no makeup also, and no specs on the eyes. तीसरी जो चीज है वो आपको एक सेल्फी फोटो अपलोड करनी होगी जिसके अंदर आपको चश्मा नहीं पहना होना चाहिए और लेडीज के केस में मेकअप ही नहीं होना चाहिए. Now, when these three things reach Swamiji, he is able to determine the weak forces, or if you remember in the video, he talks about the 84 forces. आपको याद होगा जो वीडियो हमने थोड़ी देर पहले प्ले किया था स्वामी जी का, उसके अंदर वो 84 फोर्सेस की बात करते हैं, शक्तियों की बात करते हैं, 84 जिसके थ्रू बॉडी हमारी काम करती है, ऑर्गन्स काम करते हैं. So which force out of these 84 forces has become weak, he is able to determine that through this Pran Shakti diagnosis. और इसका यूज क्या होगा ये थोड़ी देर में हम देखेंगे. राइट, आगे बढ़ते हैं. There'll be one main class of 60 to 90 minutes. Why 60 to 90? 60 minutes is the actual duration, and then we take up questions, we take up doubts, and may go up to another 30 minutes. So overall 90 minutes. Then there'll be practice class, same 60 to 90 minutes, and the cameras have to be kept on. कैमरा आपको ऑन रखना होता है क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस है. राइट, तो तभी आपको देखेंगे तो बता पाएंगे कि आप ठीक से कर रहे हैं या नहीं. देन फोर्थ पॉइंट, ऑनलाइन कोर्स एक्सेस फॉर 6 months. व्हाट इज दिस ऑनलाइन कोर्स and what is this access for 6 months? Like I told you, all the classes are recorded and they'll be uploaded to your course dashboard. सभी क्लासेस रिकॉर्ड की जाती हैं और आपके कोर्स डैशबोर्ड में अपलोड कर दी जाती हैं. आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है जिसके थ्रू आप अपने कोर्स डैशबोर्ड में लॉगिन कर पाएंगे. तो ये सारी रिकॉर्डिंग्स आपके पास 6 महीने तक रहती हैं. These recordings will remain with you for 6 months, which is enough time to learn all the kriyas by heart. Right? Next, videos of all kriyas done in the class.
How this is different from the last point is, the last point was about the class recording, the whole duration of 90 minutes. But this point is about video of each Kriya separately, not the whole class. For example, some Kriya may take 2 minutes, some may take 20, 10 minutes. So separate videos of separate Kriyas will be given to you. So you don't have to watch the 90 minutes duration to just look at one Kriya, which may take just 2 minutes to watch, right? So this is the first point. Written instructions in English and Hindi. As soon as log into your course dashboard, you will find written instructions which can be downloaded and you can print them also. आपको आपके कोर्स डैशबोर्ड में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखित निर्देश मिलते हैं जो आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके और डेली क्रिया करने के लिए यूज कर सकते हैं. Then seventh point is the private WhatsApp group to ask doubts, questions 6 days a week. This is very important. Like 2 days of the week, you'll be live with us and you can clear your doubts in the live class only. But when you're practicing alone on the remaining 5 days of the week, and if you have any doubt that time, so this is the place that you'll be asking your question, asking your doubts in. Our mentors are there, our experts are there in this group. So they'll be answering and clearing all your doubts and guiding you step by step. ये private जो WhatsApp group है, ये जो support group है, आपको कोई भी doubt होता है, वो इसके अंदर ग्रुप के अंदर आपने पूछना है. हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, इसी ग्रुप में ऐड होते हैं, वो आपको गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार क्या होता है, क्लास में लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन जब आप करना शुरू करते हैं, खुद करना शुरू करते हैं विदाउट इंस्ट्रक्टर, तब आपको पता लगता है कि थोड़ा डाउट आ गया, थोड़ा कुछ सवाल है. तो ये प्राइवेट व्हाट्सएप जो ग्रुप है, इसके अंदर आपने पूछना. Then participant progress tracking and feedback. We track each participant's progress on a weekly basis so that we know if you're progressing or not, and if not, then we try to find out the reason. तो ये feedback आप देंगे weekly basis पर. Then therapy customization for each participant in the 10th week. This is very important. If you remember the first point I talked about, Pran Shakti diagnosis. Now that diagnosis will be done in the first week and the diagnosis will be used in the 10th week. Now the question arises, if the diagnosis is done in first week, why the therapy is not customized in the first week only? एक सवाल उठता है कि अगर diagnosis first week में है, तो 10वें हफ्ते में क्यों उसका customization कर रहे हैं, उसका use क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है. There's a reason behind it. Let me explain. The body is first, in these 9 weeks, the body is prepared to receive this customization. शरीर को पहले तैयार किया जाता है 9 हफ्ते में customization को और रिसीव करने के लिए, कस्टमाइजेशन को लेने के लिए. अब होता क्या है 9 हफ्ते में? कई चीजें होती हैं, but primarily there are 3 things that happen in these 9 weeks. First, the Vata, Pitta and Kapha of the body is balanced. Second, there are 3 basic alignments, structural alignment. Swamiji talks about in the video also. There are 3 basic alignment, structural alignments of the body: inner thighs, navel, and the chest. So the alignment is done. One of the second thing that is done is alignment of these 3 areas. And the third important thing that happens in these 9 weeks is you are taught controlled exhalation. तीसरी जो चीज है, आपको controlled exhalation सिखाया जाता है. And this is the reason that if you are doing Kapalbhati on a daily basis, you are told not to do it for the next 5 to 6 months. Because in Kapalbhati or any Kriya that you do which involves forced exhalation, एकदम से जो सांस छोड़ते हैं वो कपालभाति के अंदर वो मना करते हैं. बिकॉज यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है आपको? कंट्रोल्ड एक्सहेलेशन. Kumbhak therapy is based on controlled exhalation. So these 3 things happen. So when the body is now ready, now the kriyas will be fine-tuned and customized in the 10th week. So this is the reason why the diagnosis is used in the 10th week, right? 10th and the last point is you get extended support for 30 days after the program is over. Thus, 9 हफ्ते बाद, इनफैक्ट 10 हफ्ते बाद, 10 हफ्ते में 10th वीक में आपको कस्टमाइजेशन मिलता है, जो मैंने अभी बात की आपसे. You still get 30 days of support
because many a time, why we do this? Many a times, some people, some participants fall sick and they are not able to attend many. They miss a lot of classes. So just to cover that, so that they don't feel left out, they don't feel that they've missed something. The support is extended for 30 days. All right. Now, all the points are here. And program fee for Ashtang Chikitsa 9-week program, including everything that I just talked about. The customization, the diagnosis, the 18 classes, one extra customization class, WhatsApp support in the group, and then all points I talked about, the video recordings, the written instructions, everything. 14,500 is the normal price, but like I promised you in the beginning, there's a special pricing for people who are just here. What is that? Let's know. Just 6,500 for the complete program, all 10 points of the customization, the classes, the support, everything all inclusive. You don't have to pay anything extra apart from this amount. So it has been made so affordable that most of the people will be able to take advantage of it. How to enroll? First step is to pay the program fee. Step 2 is to post the payment receipt in the WhatsApp group. Third step is to fill up the participant onboarding form that Neha from our team will be sending you. Step 4 is to join the classes, the class WhatsApp group. And step 5 is to start attending classes to learn Ashtang Chikitsa. Simple 5-step process. Payment methods we'll share in chat here and in the WhatsApp group also. And this is the last slide, the super team, which will be at your service. And we don't call ourselves the super team. Our participants call us this super team. They've given us this label because when you enroll and the kind of support that you'll be getting, so you may also start calling us a super team. We have Rachna Shrimal Bothra. She is the program director and the host of this webinar today. Shalini Bhagwat, she is the class manager. She takes care of all the batch timing, which mentor will be taking which classes. Then Ashwini Kumar, he's the IT manager. Then we have mentors, Ranjana, R.D. Gupta ji, Soni, Aruna, Neena, Suruchi, Meera, Sushma. We have a lot of mentors because we want to take care of each and every participant because this is an online program. And we understand that sometimes the things are not so smooth while you are attending. The internet sometimes is not so good. You get logged out. Okay, so there are challenges, but there are more advantages to it, which you'll understand. Then we have Neha Upadhyay. She is the enrollment in charge. She'll be the person who you'll be talking to the most before starting your classes. Okay. Anil Chauhan, that's me. I'm the WhatsApp admin. I'll be answering many of your questions in the WhatsApp group after this webinar is over. Right now, after this, after my session is over, after this slide is over, Swamiji will be joining us live. But due to shortage of time, he may not be able to answer all your questions. But please don't worry about it. If your question is not taken or answered here, please post your question in the WhatsApp. We'll answer each and every question. Sometimes there are a lot of questions. People ask a lot of questions all at once. So just be patient. We'll answer. If it's not answered, if we miss somehow your question in the WhatsApp group, please post again. We'll answer each and every question. Don't worry about that. Then we have Himanshu Reddy. He's the technical person. He's the person who uploads the videos, because there's an app also which you'll be downloading so that you can watch the videos on your mobile phone itself. Then we have Anita ji. She's the personal support executive. She'll be she calls 20 to 30 people every day to find out if everything is going on fine or not. If you are facing any problems, then she solves your problem and she finds you the solution for it. So with this, I come to the end of my presentation. Thank you very much. Namaskar. Thank you so much, Anilji, for sharing the program details. Let me just check if Swamiji has joined in. No, he's not here. He'll join in another 5 minutes. Okay. So let's just check out the questions. Participants, you can type your questions. We will be trying to take up
as many questions as possible. Okay. What are the timings? Indrila ma'am. So every week, it's like we have the classes in the evening only. So for the convenience of most people to attend, each week we start with either 6 o'clock, 6:30 and 7 o'clock. So these are the three timings. This Monday we are starting at, Anilji, this Monday we are starting at what time? 7 p.m. Okay, so we are starting at 7 p.m. this Monday. Priyanka ma'am, you don't have any classes in the morning. It's difficult to attend in the evenings. For right now, we do not have any classes in the morning. So if you can just adjust for twice in a week, that would be great. It's just twice in a week. So if you can manage your other schedules, then it can work out. That's why we have kept it, 7 o'clock, so that even people going to office can attend. Okay, let me see what are the next questions. Awaiting response. Is this useful for Parkinson? Definitely, Raju sir, it is useful for Parkinson's. As mentioned earlier, it is for neuro as well as muscular degeneration. So Parkinson's comes under neurodegeneration. So it can be easily be healed with Ashtanga Chikitsa. Will you provide only one named mentor? 1 minute. This question, will you be providing? What is the meaning of that one named mentor? So for we normally, if we have a big batch size, we divide it into two. So two different mentors take it up, so that all the participants are basically attended to. If the group is too large, it's difficult for one mentor to take it up. So we normally divide it into two. I hope that's your question has been answered, ma'am. Sushil Kumar, sir, is this therapy work if spine surgery done, but problem not cured? Definitely, sir. Sushil, sir, it can be. This therapy will work because you're working on your breath and you're making your internal system strong. So there are a few movements, but mostly people who are not able to do movements, they do the Kumbhak therapy part or the breath part, and they make their system strong. And after that, they start doing the movements. Okay. Is it any phone number where I can? Just a second. Can you please, Harpreet Singh? Just a second. Nitin sir, I will be able to join in June 23rd. Can I pay in advance and join after? Definitely, Nitin sir. You can pay now because seats are filled fast. So that's the reason it's always better if you book your seat in advance. Is there another batch after 20th June? While ma'am, we start a batch every Monday. So after 20th June also, you definitely have a batch. Do you need to stop medicines? Raju Bonsle, sir. So we do not recommend at the start to stop medicines. You yourself will feel the changes and the need to not to take the medicines. So as and when that happens, you will stop taking medicines yourself. But we do not tell you to stop taking the medicines immediately. Reason being, because the body goes through a lot of changes when you're doing Kumbhak. It's an extremely powerful technique when you're working on your internal system. So
Slowly, we are going to take it off medicine, not immediately. रचना जी स्वामी जी है joined. I'm Okay, putting him in the spotlight. okay. Thank you so much. Good evening, Swamiji. So I'll just take up some questions. Okay. Neha, can we answer a few questions? How to join Kumbhak? There are a few questions which is not in reference to disease. Can we please answer them? Okay. We'll answer in the WhatsApp group. JS, yes. JS sir, बार cold, गला खराब हो रहा है. Reason flu, medicine असर नहीं कर रही है. क्या करें? Okay. दो चीजें, two things which the humanity is losing, and a recent research says, एक नया रिसर्च है, मालूम है उसमें ये आया है कि इन द लास्ट 1 year और सो 1 साल या इसके अंदर देयर इज एन इंसेसेंट राइज इन कार्डियो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. कार्डियो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बहुत सारे बढ़ गए हैं. उसका रिपरकशन क्या है? एक है एट्रियल फिब्रिलेशन. एट्रियल हार्ट का बीट ना अनइवन होता जा रहा है, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन. देन सेकेंड थिंग इज एड्रिनल फटीग. एड्रिनल ओवर एक्टिविटी भी कहते हैं या एड्रिनल फटीग कहते हैं. बिना कारण थकावट महसूस होता है पॉपुलेशन में. क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? बहुत लोग ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि बिना कारण शरीर के अंदर थकावट होता है. सो भी रहे हैं, नींद मतलब ऐसा कोई काम भी नहीं है हैवी, उसके बावजूद भी बिना रीजन के शरीर में थकावट रहता है. सो इट इज ऑल रिलेटेड टू कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ. एक और चीज मैं आपको बता दूं कि विद इन बॉडी, शरीर के अंदर ऑर्गन फंक्शन जो है वो वीक होता जा रहा है. शरीर के अंदर ऑर्गन का फंक्शन, इसलिए ऑर्गन डैमेज आप लोग देख रहे होंगे. और कुछ इंसिडेंट्स के साथ में इसको जोड़ के देखेंगे ना, नंबर ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक ये बहुत बढ़ता जा रहा है. यंगस्टर्स में भी हार्ट अटैक हो रहा है. ऑर्गन फंक्शन यानी इन टर्म्स ऑफ किडनी फेलियर्स, किडनी का इशू कितने लोगों को आ रहा है आप देखेंगे तो बढ़ रहा है. नॉट ओनली दैट, in females the hormonal function, also in males in the hormonal function and the fertility rate is going down drastically. तो क्या शब्द इस्तेमाल किया? कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ. कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ जब भी खराब होगा तो आपका बॉडी के अंदर फंक्शनिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी. इसका रिजल्ट एक और चीज पे आपको देखने को मिलता है, लेबर्ड ब्रीदिंग. सांस, कोई भी काम करेंगे बहुत जल्दी सांस फूलने लग जाता है और जोर नहीं लगा सकते शरीर के अंदर से, ठीक है. अब शरीर का फंडामेंटल स्ट्रेंथ ही अगर कमजोर होता जाए तो ऐसी चीजें हैं जिसे हम कहेंगे कि डीजेनरेशन एंड वीक रीजेनरेशन. घुटने घिस रहे हैं मगर वापस नहीं बन पा रहे. जॉइंट्स जो हैं उनमें फंक्शनिंग कैपेसिटी कम हो गई, तो फ्रोजन शोल्डर जैसी चीज, जॉइंट्स जो है वो स्टिफ होते जा रहे हैं. देन स्पाइन में स्ट्रेंथ नहीं है तो स्लिप डिस्क होता जा रहा है. एक स्लिप डिस्क के आप सर्जरी करवा लो, दूसरा हो जाएगा. क्या सर्जरी इसका ट्रीटमेंट है? सर्जरी तो ट्रीटमेंट नहीं होता किसी चीज का. सर्जरी तो इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है. मेडिसिन से आप ट्रीट नहीं कर सकते इन सब चीजों को, क्योंकि मेडिसिन आपके फंडामेंटल स्ट्रेंथ को, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ को, कार्डियक स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाता. तो जब आप ये फंडामेंटल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा पा रहे तो ट्रीटमेंट कैसे हो पाएगा? मेडिसिन से आप दर्द का इलाज करोगे, दर्द के अलावा मेडिसिन किसी चीज का इलाज नहीं करता. कौन सा मेडिसिन लेके डायबिटीज ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज ठीक हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो गया, थायराइड ठीक हो गया, किसी भी मेडिसिन से तो नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता.
So the thing is, you have to get back the fundamental strength. अच्छा, एक और एग्जांपल लेके बताता हूं, क्या सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है आपके न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के लिए? जब आप बाहर से मसल को बढ़ाना चाहते हैं या फिर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? अगर आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करें, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज यानी थोड़ा सा वेट लेके काम करें, या कोई दूसरे तरफ से जोर लगा रहा है उसके अगेंस्ट में जोर लगाएं, रेजिस्टेंस थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आपके मसल पे, एक्सटर्नल मसल, बाहरी मसल पे और जॉइंट्स पे भी असर पड़ता है। मगर अंदर जो आपका मेटाबॉलिज्म खराब है या अंदर से जॉइंट का इशू है या नर्व का इशू है, वो कैसे ठीक करेंगे? अंदर अगर आप रेजिस्टेंस लगाएंगे या रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ काम करेंगे। कुंभक में आप क्या करते हैं? वही रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं सांस रोक के, एंड यू डू सर्टेन एक्टिविटी। तो जब ये करेंगे अंदर से तो देखेंगे कि आपके ब्लड का फ्लो ठीक हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, हार्ट का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, जिसको हम फंडामेंटल तौर पे बोलेंगे टॉलरेंस बढ़ जाएगा। टॉलरेंस जैसे ही आपका बढ़ जाता है, पहली चीज, जो नुकसान आपके शरीर का हुआ है या सिम्टम जो आ रहे हैं आपको किसी भी बीमारी की वजह से, वो सिम्टम खत्म हो जाएंगे। जो काम आप नहीं कर पा रहे थे विथ योर बॉडी, विथ योर लिम्स, हाथ पांव से जो चीज नहीं कर पा रहे थे वो करना शुरू कर देंगे, आपको आसानी हो जाएगी वो करने में। कोई भी स्टिफनेस बॉडी की, जॉइंट में कहीं पर भी कोई स्टिफनेस है वो लूज हो जाएगा। कुंभक करते ही आपके बॉडी में टेम्परेचर या थर्मो रेगुलेशन बढ़ जाता है। दोबारा से बता रहा हूं, कफ कोल्ड क्यों हो रहा है? मेटाबॉलिक हीट बॉडी में अगर कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारे कारण के कारण वजह से मेटाबॉलिक हीट अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो बहुत जल्दी थर्मो रेगुलेशन ठीक ना होने के कारण सर्दी जुकाम लगता जाएगा। थोड़ा टेम्परेचर, और आजकल तो हम इस्तेमाल करते ही है ना, ड्रास्टिक चेंज इन टेम्परेचर, फ्रिज का कोई चीज पिया या एसी यूज कर रहे हैं, गर्मी ज्यादा हो रही है फिर सडनली कम हो रही है, तो ऐसे में आपका थर्मो रेगुलेटरी फैक्टर और मजबूत होना चाहिए। तो कैसे मजबूत होगा? एक चीज आप देखेंगे, ये हमारे हजारों पार्टिसिपेंट्स में ये ऑब्जर्वेशन है कि जब वो कुंभक करते हैं, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम देयर वायरल इन्फेक्शन, एपिसोड्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन गोज डाउन ड्रास्टिकली। ठीक है, तो थर्मो रेगुलेटरी फैक्टर आपके ब्लड फ्लो से बॉडी के अंदर कंडक्ट होता है। दूसरा, हाइपोपिट्यूटरी हाइपोथैलेमस एक्सिस कहते हैं इसको, छोटा हाइंड ब्रेन, छोटा मगज है ना पीछे की तरफ में, वहां पिट्यूटरी ग्लैंड है, और हाइपोथैलेमस। थर्मो रेगुलेशन हमेशा पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और ब्लड फ्लो की वजह से रेगुलेट करता है। अगर उसको स्ट्रेंथ हम दे देंगे तो आपका थर्मो रेगुलेटरी फैक्टर और थर्मो टॉलरेंस, ये दोनों बढ़ जाएगा। इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं हो सकती। बाय करेक्टिंग योर फूड यू कैन डू दैट। इसके लिए आपके बॉडी का ये थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेंथ को आपको बढ़ाना पड़ेगा। कोई भी स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका विद इन द बॉडी क्या है? कुंभक है। आप 10 किलो का वेट उठाते हैं, 15 किलो कैसे उठाते हैं? 10 किलो उठाते हैं, कुछ हद तक सांस रोकते हैं, 15 किलो और ज्यादा। तो आपकी सांस रोकने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपका थर्मो रेगुलेटरी फैक्टर होगा, और देखेंगे कि उतनी एपिसोड्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन या टेम्परेचर से रिलेटेड इश्यू जो है वो कम हो जाएंगे आपकी लाइफ में। ये इकलौता तरीका है। देयर इज नो अदर वे, लेट मी टेल यू क्लियरली, विद इन द बॉडी यू कैन एक्ट थ्रू कुंभक ओनली, देयर इज नो अदर वे। तो ये इकलौता तरीका जिसके कारण थर्मो रेगुलेशन और थर्मो टॉलरेंस, ये दोनों आप बढ़ा सकते हैं। Okay, Archana Gupta ma'am talks about lower back pain, leg pain and body pain. अच्छा, अब मैं हर पॉइंट को अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज दीज कॉन्सेप्ट्स आर नॉट देयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी इतना ज्यादा है नहीं, आपको ग्रीको रोमन टर्मिनोलॉजी में ट्रेन किया गया है। एलोपैथी जो बोलता है आप उसी को मानते हैं, हालांकि वो कुछ भी ठीक नहीं करते, फिर भी मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है उसकी, तो आपको वही शब्दावली मालूम है। मैं थोड़ी सी और भी शब्दावली इस्तेमाल करूंगा, बट आपके अंडरस्टैंडिंग में, आपकी समझ में उसको डालने की कोशिश करूंगा। शरीर के नीचे का हिस्सा जो होता है, कभी भी कमर और कमर से नीचे का हिस्सा
आयुर्वेद के हिसाब से ये वात प्रकृति इसमें ज्यादा होता है, तभी आप मूवमेंट जो करते हैं ना, वो जमीन कमर के नीचे के हिस्से से आप मूवमेंट करते हैं, तो ये वात प्रकृति का हिस्सा होता है। और वात प्रकृति जो है ना, आपके शरीर में बहुत तेजी से बदल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक दिन सडनली आप कमजोर फील करते हैं, इफ यू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, आपको क्या मालूम है कि देयर आर हिडन इन्फेक्शंस इन योर बॉडी, जिसका कि आपको पता भी नहीं चलता। बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ सीजन देयर आर हिडन इन्फेक्शंस ऑल्सो। तो सडनली वन डे यू फील अ लिटिल वीक, कमजोर फील करते हैं, उस दिन आप ज्यादा बिस्तर पे पड़े रहें या फिर ऐसे ही बैठे रहें, उसके बाद सडनली उठते हैं तो चक्कर आ जाता है या पांव कांपने लग जाते हैं। सडनली क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ सम इंपैक्ट ऑफ वात इन द एनवायरनमेंट, सपोज करो बाहर हवा ज्यादा चल रही है तो भी आपके शरीर में वो इंपैक्ट आ जाता है। एंड बिकॉज यू हैव लो टॉलरेंस, आपकी सहन शक्ति कम हो गई है। अपने दादा दादी नाना नानी को याद कीजिए, वो शरीर से जितना काम कर सकते थे आप नहीं कर पाएंगे। ऑलमोस्ट लाइक 80% डाउन हो चुका है हमारा फंडामेंटल टॉलरेंस। तो आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, सडनली बॉडी में देयर इज अ चेंज विच योर बॉडी थिंक्स सम काइंड ऑफ वीकनेस, कोई वीकनेस जैसा समझता है। तो आप देखेंगे उस दिन आपको पांव में दर्द ज्यादा होगा, हालांकि आपने इतना काम नहीं किया, लेकिन पांव में दर्द बढ़ेगा। तो ये वात प्रकोप, इसको वात प्रकोप कहा जाता है। और क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी एंड वी आर गोइंग विद द सेम काइंड ऑफ अ डाइट शेड्यूल, प्रोटीन इतना, कार्बोहाइड्रेट इतना, है ना, विटामिन मिनरल ये सब होना चाहिए। एंड वी आर इग्नोरिंग अ फैक्ट कि भोजन जो है आपको ठीक नहीं करता, भोजन एब्जॉर्ब करने की क्षमता आपके शरीर की होनी चाहिए, तभी वो फूड भी काम करेगा। तो क्या होगा कि हजम, भोजन को इस्तेमाल करने की, यानी मेटाबॉलिक, वापस आ जाते हैं उस चीज पे। एक और शब्द इस्तेमाल करूंगा मैं, वो जिसको हम माइंड कहते हैं फंडामेंटली। वैसे माइंड का कोई डेफिनेशन नहीं होता, लेकिन मैं आपको माइंड को डिफाइन करके बताऊंगा कि ये चीज किस तरीके से इंपैक्ट करती है। तो माइंड वो जोर है आपके शरीर का जिसकी वजह से आप कोई कंपल्सिव काम करते हैं हमेशा। जैसे एक टेस्ट खाना है तो आपको कंपल्शन होता है कि ये टेस्ट मुझे चाहिए, या गुस्सा आ जाता है एक बात पे, या खुशी हो जाती है एक बात पे, तो आप वो सब कंपल्शन के साथ में, वो जोर जो आपको कंपल्सरली उस इमोशन में ला देता है, उसको माइंड कहते हैं। तो आपके शरीर का फंक्शन भी बेसिकली माइंड ही जोर देके कहीं ना कहीं करवाता है और उसके बाद में बॉडी पे इंपैक्ट आता है। तो जब आपके माइंड में बहुत फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएगा, जो कि इस वक्त में देखा जा रहा है कि 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ अ मेंटल डिविएटरी फैक्टर। माइंड में इश्यू 90% जनता को एपिडेमिक हो चुका है, मगर उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि नोबडी नोज व्हाट इज इट, कोई जानता ही नहीं है क्यों हो रहा है। सो आप भी देखेंगे कि एंजाइटी लेवल्स लोगों में बढ़ गए। रिएक्टरी सिचुएशन, 6 बच्चे 10 में से अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के शिकार हैं आज के टाइम पे, जो कि एक बहुत ही मीन नंबर है, इससे ज्यादा है एक्चुअली। कहने का मतलब कि जब भी आपका माइंड ज्यादा और हम चीजें भी ऐसी देख रहे हैं जहां पे फ्लक्चुएशन ज्यादा, जैसे आप स्क्रीन देखते हैं, टीवी स्क्रीन देख रहे हैं या मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, जहां तो लाइट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इसकी वजह से मेंटल फ्लक्चुएशन जो है वो कॉमन है लोगों में, फ्रस्ट्रेशन लेवल कॉमन है, और उनको अंदर से खुशी नहीं मिल रही क्योंकि मेंटल फ्लक्चुएशन, डिविएशन बहुत ज्यादा हो गया। इसके कारण आपके शरीर के अंदर जो है एक एड्रिनल फटीग होता है, जो कि पहले भी बताया था मैंने। एड्रिनल फटीग, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन है वो ज्यादा फॉर्म हो रहा है, और उसकी वजह से फटीग, थकावट से शरीर में आ रही है, और उसका इंपैक्ट सबसे पहले कहां पड़ेगा, कमर से नीचे। घुटने की प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि पहले जो बहुत बुजुर्ग लोगों में होती थे, आजकल बहुत यंग टाइम से ही घुटनों की प्रॉब्लम शुरू हो रही है। पांव की स्ट्रेंथ, फंडामेंटल स्ट्रेंथ वो कमजोर हो रही है, और रीढ़ की हड्डी की स्ट्रेंथ, फंडामेंटल स्ट्रेंथ कमजोर हो रही है।
तो मेंटल डिविएशन एक फैक्टर है जो कि आपके शरीर के नीचे, अच्छा मेंटल डिविएशन का एक और, जब भी एड्रिनल फटीग होगा आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन लेवल, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ये दोनों खराब होता है। एब्जॉर्प्शन खराब होगा तो आयरन की कमी होगी और आपके शरीर में खून बनना कम होता है। और भी बहुत सारी विटामिन B1, B12 और ये सब चीजें आप सुनते ही हैं, गूगल और यूट्यूब में आप देखते ही हैं। इसका कारण, इसका रीजन मैं बता रहा हूं। विटामिन खा के आप ठीक नहीं हो सकते, ट्राई करके देख लीजिए, कैंसर होने के चांस बढ़ जाएंगे। कैल्शियम खा के किसी का ऑस्टियोपोरोसिस आज तक कोई एविडेंस नहीं है कि ठीक हुआ, बल्कि ब्रेस्ट कैंसर 200% बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा। तो एक रीजन ये है, जब एड्रिनल फटीग होगा तो आपके पांव कमजोर फील होंगे, वहां पे जान कम लगेगी जिसे कहते हैं। अगर आपके शरीर में खून की कमी होगी तो भी आपके पांव पे असर पड़ता है, दर्द होता है पांव में, ये आप देखिए। तीसरी चीज, डाइजेस्टिव इश्यू जब भी होता है बिकॉज ऑफ एड्रिनल फटीग, अगर मेटाबॉलिक, कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ मैंने पहले बताया ही आपको, वो जब होगा तो सबसे पहले असर आपके कमर और कमर से नीचे दिखाई पड़ेगा। फीमेल्स में अगर हार्मोनल इंबैलेंस होगा, पीरियड्स अगर रेगुलेट नहीं होंगे तो कमर और कमर से नीचे उनको ये असर दिखाई देगा। अब और भी चीजें बताई जा सकती है, बट फिर ठीक कैसे करें इसको, ठीक कैसे करें? तो वापस फंडामेंटल पे आना पड़ेगा कि आपके शरीर के अंदर ऑर्गन फंक्शन, कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ, ये कुंभक के जरिए आप इसे ठीक कर सकते हैं। ये करेंगे, फिर आप देखेंगे ये एपिसोड्स, आपके पाँव में कमजोरी फील होना, या एक और चीज है जलन होना शरीर के अंदर जो होता है ना, ये थर्मो रेगुलेटरी फैक्टर है आपके बॉडी का। थर्मो रेगुलेटरी कहां से होगा? पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस एक्सिस, इस पे अगर आप इंपैक्ट डाल सकें तो उसके बाद ये पित्त दोष, इसको आयुर्वेद में क्या कहेंगे? पित्त प्रकोप। तो ऐसे में आपको एक तो पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस एक्सिस पे काम करने की जरूरत है, उसको ठीक करने की जरूरत है, कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ ठीक करने की जरूरत है, और फ्लो फैक्टर आपके बॉडी में ठीक करने की जरूरत है, जो कि आप कुंभक से कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और ऑप्शन फिलहाल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी के स्क्रीन बंद हो गए, मतलब कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है? मुझे तो ब्लैंक स्क्रीन से बात करने की। Okay, the next question is from Madhurima ma'am. She talks about epilepsy. एपिलेप्सी को दो तरीके से मैं डिफाइन करता हूं, ठीक है? दो तरीके से आपको बताना, एक बहुत सिंपल तरीके से आपकी समझ में आना चाहिए। तो अगर हम लोगों को ऑब्जर्व करें जिनको एपिलेप्टिक फिट आते हैं, अगर हम लोगों को ऑब्जर्व करें जिनको एपिलेप्टिक फिट आते हैं, तो उनके शरीर में आप बदलाव क्या देखते हैं? आप ये बदलाव देखेंगे कि उनका शरीर टाइट हो रहा है, वो हाथ पांव को टाइट कर लेते हैं और उसके बाद शरीर कांपने लग जाता है, ठीक है? एपिलेप्सी का कारण क्या है, इसी ऑब्जर्वेशन से आपको पता चल जाएगा। तो बॉडी के अंदर जब रिस्क फैक्टर बढ़ेगा तो एपिलेप्टिक एपिसोड्स बढ़ जाएंगे। वो रिस्क किसी वजह से आ सकता है, हर एक इंसान के लिए वो अलग अलग भी हो सकता, बट फंडामेंटली आपको बता रहा हूं, शरीर के अंदर जब भी रिस्क बढ़ेगा तो एपिलेप्टिक एपिसोड्स, केवल एपिलेप्सी को केवल एपिलेप्सी से ना जोड़ें, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एपिलेप्टिक एपिसोड्स की तरफ में इंडिकेट करते हैं। जैसे ब्रेन के अंदर ब्लड का क्लॉटिंग होना, ठीक है ना? ये भी एक ऐसा रीजन है जो इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी के अंदर रिस्क बढ़ रहा है। जब भी रिस्क बढ़ता है तो ब्लड थिक होने लग जाता है। तो रिस्क बढ़ते ही ब्लड थिक होगा और एपिलेप्टिक एपिसोड्स होंगे, या फिर स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं। इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं आपको बहुत आसान शब्द में समझा रहा हूं और ये आपको कहीं और मिलने नहीं वाला है, क्योंकि इस तरीके से हम अप्रोच ही नहीं कर रहे ह्यूमन हेल्थ को। तो रिस्क कैसे बढ़ा रहे हैं अपने शरीर के अंदर? एक रीजन मैंने बताया, रिस्क का एक और रिजल्टेंट है विच इज एड्रिनल फटीग। दूसरा मैंने बताया कार्डियो मेटाबॉलिक वीकनेस, एट्रियल फिब्रिलेशन बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, ये भी रिस्क का ही इंडिकेटर है।
मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ये भी रिस्क का इंडिकेटर है। डायबिटीज बढ़ रही है, थायराइड एपिसोड्स बढ़ रहे हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है, कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है, और भी बहुत सारे इश्यूज आप देखेंगे सभी बढ़ने की तरफ ही जा रहे हैं, कुछ भी कम नहीं हो रहा। ना रिस्क बढ़ाने का क्या क्या ऐसा हमने अपना लिया अपने जीवन में जिससे शरीर के अंदर का रिस्क हम बढ़ा रहे हैं। पहली चीज, इंसेसेंट यूज ऑफ केमिकल मेडिसिन। केमिकल मेडिसिन हमारी बॉडी डिजाइन नहीं है केमिकल्स के लिए। जब भी हम केमिकल डालते हैं इसके ऊपर लोड आता है और रिस्क बढ़ता है। शरीर जो है, लिवर जो है आपका, वो 98% तक केमिकल को बाहर निकाल देता है, 2% ओवरलोड किया जाता है, या फिर लिवर को बाईपास करने के लिए इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस इंटरवेंशन या इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, जो कि रिस्क बढ़ा देता है ना। एक तरफ तो हम सोच रहे हैं कि हम जल्दी बना रहे हैं, शरीर के अंदर कोई चीज पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ से शरीर उसको रेजिस्ट करता है, वो उसके लिए डिजाइन नहीं हुआ तो उसको निकालने की कोशिश करता है, उसका रिस्क बढ़ जाता है। तो बचपन से लेके अभी तक अगर आप देखेंगे कितनी दवाइयां केमिकल्स खाए होंगे, तो उसके कारण धीरे धीरे करके इंटरनल रिस्क फैक्टर, ये जितनी चीजें आपको बताएं ये सब होने लग जाता है। आपकी किडनी जवाब देने लग जाएगी। तो ध्यान से आप जरा गूगल में टाइप कीजिए, हाउ मेनी डायलिसिस सेंटर हैज इमर्ज अराउंड योर एरिया। डायलिसिस सेंटर कितने खुल रहे है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से रिस्क बढ़ रहा। 25 साल, यहां तक कि मैंने तो देखा है 19 साल 20 साल का बच्चा जो है वो हार्ट अटैक हो गया। तो नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया हमारा हार्ट अटैक। तो रिस्क बढ़ रहा है, इसका इंडिकेटर है। बच्चियों को भी थायराइड के इश्यूज आने लग गए हैं। 12-13 साल की बच्चियों में थायराइड हो गया। 2 साल 3 साल के बच्चे इंसुलिन का इंजेक्शन देने लग गए। तो ये एपिसोड्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और इसका मतलब आप शरीर के अंदर रिस्क बहुत बढ़ा रहे हैं। तो एक रीजन ये कि जब भी आपके शरीर के अंदर रिस्क होगा, आपका शरीर आपको बचाने की कोशिश करेगा, तो वो इम्यून सिस्टम को हाइटन अप कर देगा, और रिस्क को रोकने का जितना भी कार्यक्रम है, जितना शरीर कर सकता है, वो सारा अप कर देगा। जैसे एड्रिनल ओवर एक्टिविटी हो गई। तो ऐसे में रिस्क जब भी बढ़ेगा तो फिट आ जाता है। कुछ लोगों को अगर टॉलरेंस नहीं है रिस्क का, तो अगर रिस्क का टॉलरेंस नहीं है, झेल पाने की क्षमता नहीं है, तो फिट्स आ जाएंगे, या स्ट्रोक आ जाएगा, या अटैक आ जाएगा। इस तरीके की चीजें है ना। एट्रियल फिब्रिलेशन की बात कर रहा हूं, ब्रैडीकार्डिया, टैकीकार्डिया बढ़ रही है दुनिया में, ये आप देख लीजिए तो पता चल जाएगा। तो रिस्क का टॉलरेंस लाना पहला सोल्यूशन, पहला आपको रिस्क का टॉलरेंस लाना पड़ेगा, तभी जाके इसका कोई सोल्यूशन होगा। दूसरी बात ये, जिससे जब हम फिट्स की बात करते हैं तो एक तो टॉलरेंस बढ़ाएंगे, तो कुंभक करने के बाद में हमने देखा है कि एपिलेप्सी के एपिसोड्स कम हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा जो रीजन है वो मैं बताना चाहता हूं कि ये थोड़ा सा मतलब टेक्निकल टर्म्स में बताता हूं। अगर आपके शरीर में एक सिंपल सा स्ट्रेंथ कम होगा, इसको कहते हैं दक्षिण बल या दक्षिणाग्नि। दक्षिण बल का मतलब क्या होता है ये मैं बताता हूं। हार्ट की स्ट्रेंथ होती है, कार्डियो मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ दक्षिण बल का मतलब होता है। मगर ये होता क्या इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंस, ये होता क्या? अगर आप मैक्सिमम इनहेल करके 4 गुना ज्यादा उसका होल्ड कर सके, मैक्सिमम इनहेल करके 4 गुना ज्यादा उसका होल्ड कर सकें, तो आपका दक्षिण बल ठीक है। अच्छा, ज्यादातर लोग जो यहां पे हैं, ज्यादातर क्या सभी लोगों में ये कैपेबिलिटी नहीं है। और भी तरीके से दक्षिण बल बताया जा सकता है, जैसे आपका स्पाइन का जो लोअर एंड है, लोअर पार्ट है, स्पाइन का लोअर पार्ट, जिसे हम मूल आधार कहते हैं, मूल आधार का जो स्ट्रेंथ होता है वो भी दक्षिण बल की तरफ का इंडिकेटर है। कार्डियक फंक्शन जिसे हम कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ, ये सेम दक्षिण बल है। और क्या हम देख सकते हैं अपने शरीर के अंदर, किसी भोजन को लेके उसको डाइजेस्ट करने की एबिलिटी, यानी उसको इस्तेमाल करने की एबिलिटी, किसी चीज को इस्तेमाल यूज करने की एबिलिटी भी दक्षिण बल है।
पुश करने की एबिलिटी की, रेजिस्ट करने की एबिलिटी भी दक्षिण बल है। तो फंडामेंटली अगर आप दक्षिण बल को बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे आपका टॉलरेंस बढ़ जाएगा, किसी भी चीज के को झेलने की क्षमता बढ़ जाएगी। नॉट ओनली दैट, आपका कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ बढ़ जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो इस वक्त में सबसे ज्यादा हिट ले रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड कहलाता है, उससे हार्मोन्स रिलीज नहीं हो पा रहे प्रॉपरली। तो सभी लोगों को कुछ ना कुछ हार्मोन का इशू है, थायराइड का इशू है, डायबिटीज का, पैनक्रियास का इशू है, एड्रिनल का इशू है, या इस तरीके गोनाड्स का इशू, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का इशू है, इस तरीके का हार्मोन का इशू। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर आपको दोबारा से रीएक्टिवेट करना हो तो आपको ब्रेथ को इस्तेमाल एक तरीके से, कुंभक के साथ में ब्रेथ को एक तरीके से इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसका कोई एक सिंपल फॉर्मूला नहीं है, उसको कुछ फॉर्मूले को अगर इकट्ठा करेंगे तब जाके वो काम होता है, जो कि हम उसका एक हिस्सा जो है अपने अष्टांग चिकित्सा के अंदर हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं, है ना। कुछ रिदम, कुछ फॉर्मूला हमने अष्टांग चिकित्सा में इस्तेमाल किया हुआ है, जिसके कारण पिट्यूटरी एक्टिविटी बढ़ती है, कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ बढ़ता है, दक्षिण बल फंडामेंटली बढ़ता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये एपिसोड धीरे धीरे करते 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 आप इसे अपनी लाइफ से हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे टॉलरेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे बॉडी के अंदर का फंक्शनिंग बढ़ेगा, आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाते हैं, और फिर ये एपिसोड्स को थोड़े टाइम लगेगा ऑब्वियसली। कितना समय लगाया हमने बीमारी में आने के लिए, तो कुछ समय तो देना चाहिए अपने आप को। तो कुछ समय दीजिए, मैं ये आपको बोलता हूँ 6 महीने का समय दीजिए अपने शरीर को। आपका शरीर मैक्सिमम चीजों को रिकवर करता है और आपको रिजल्ट मिलेगा। उस रिजल्ट से आपको और काम, अपने शरीर पे काम करने की इंस्पिरेशन मिलेगा, एंड देन यू विल सी इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सब शरीर के लिए अलग अलग टाइम पीरियड होगा, मगर यू विल कम आउट ऑफ मैक्सिमम प्रॉब्लम इन योर लाइफ। म्यूटेड हैं। Suman Malik ma'am talks about, is this useful in myasthenia gravis? I have to take medicines. माइस्थीनिया ग्रेविस का देखिए, आप मेडिसिन, यू थिंक मेडिसिन इज ट्रीटमेंट, यू आर नॉट टेकिंग मेडिसिन, यू आर टेकिंग समथिंग। इसको बोटॉक्स लेना पड़ता है माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए ना, बोटॉक्स का आपको इंजेक्शन लगाना पड़ता है। बोटॉक्स बेसिकली एक सांप होता है, उसका जहर है, उसका जहर है जो आपको लेना पड़ता है, उससे नसें नम हो जाए। इट्स अ न्यूरोटॉक्सिन। बोटॉक्स क्या है? न्यूरोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन क्या करेगा? नस को सेंसेशनहीन कर दे, सेंसेशन लेस बना देगा। अब सेंसेशन नहीं है, इसके कारण वो फ्लिकरिंग नहीं हो रहा, वो कंपन नहीं हो रही, जिसे माइस्थीनिया ग्रेविस आप बोलते हैं। तो ये कोई ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ, ये कोई ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ, ठीक है, ये थोड़ा सा मैनेजमेंट है। तो मेडिसिन आप जो ले रहे हैं वो आपको ट्रीट नहीं कर रहा, पहली बात। दूसरी बात, मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, मत मैनेजमेंट का अपना नुकसान होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज ये, माइस्थीनिया ग्रेविस ठीक कैसे होगा, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। सो माइस्थीनिया ग्रेविस होने का रीजन है न्यूरो डीजेनरेशन, और रीजेनरेटिव कैपेसिटी नहीं है अगर आपकी, तो रीजेनरेशन की कोशिश में वो फ्लिकरिंग होती है। ध्यान से सुनिए क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपका शरीर रीजेनरेट करने की कोशिश करता है और वो कर नहीं पा रहा है, वो उसकी तड़प है, वो उसकी तड़प है। तो कमजोर क्या है आपके अंदर? रीजेनरेटिव स्ट्रेंथ कमजोर है आपके अंदर। आपके अंदर रीजेनरेटिव स्ट्रेंथ बहुत कमजोर हो गया। अगर इसको बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे करके नसें रीजेनरेट होंगी, तो ये ठीक हो जाएगा। तो वी हैव केसेस जो कि माइस्थीनिया ग्रेविस से निकल गए। कैसे हुआ? आपको दो चीजें वापस बता रहा हूं। वो रीजेनरेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो रीजेनरेटिव स्ट्रेंथ कहां से आता है, जनरेट कैसा होता है? आपके मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ, गार्ह्य पत्य अग्नि, ये रीजेनरेटिव
करवाता है आपके शरीर में। ये गार्ह्य पत्य अग्नि जो है इसको बढ़ाना पड़ेगा, जिसको हम जठराग्नि, एक इसका पक्ष होता है, इसको कहते हैं जठराग्नि। योर मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ, ये 6 लेवल पे काम करता है, 6 शक्तियां लगती है, तब 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म होता है आपके शरीर में। 7 टिश्यूज फॉर्म होते हैं। 6 लेवल क्या है? देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल। ये 6 बल चाहिए आपके शरीर में। इससे 7 टिश्यूज रीजनरेट होते हैं। वो क्या क्या है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो अगर हम आपका गार्ह्य पत्य अग्नि बढ़ा दें तो क्या होगा? रीजनरेटिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। दूसरी बात, रीजनरेशन का प्रोसेस के लिए एक रिदम चाहिए, एक लय चाहिए। इफ यू आर इन एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यू और मेंटल इश्यू, आपका रीजनरेटिव स्ट्रेंथ उतना काम नहीं करेगा जितना उसको करना चाहिए। सो देयर इज अ रिदम ऑफ दिस बॉडी, एक लय है शरीर के अंदर। उस लय को अगर आप करेंगे तब जाके, अगर रीजनरेटिव स्ट्रेंथ बढ़ाया आपने और उसके बाद में वो आपके टिश्यूज फॉर्म सही तरीके से होंगे, सही जगह पे होंगे। ऑल्सो इट नीड्स अ प्रिसिशन ट्रीटमेंट। माइस्थीनिया ग्रेविस यूजुअली चीक के नर्व्स में आ जाता है, या कहीं और भी हो सकता है विच फ्लिकर्स। तो वहां पे आपको प्रिसिशन ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए हम अपने पूरे मॉड्यूल को कस्टमाइज करते हैं हर एक ह्यूमन बीइंग, हर एक बंदे के हिसाब से। तो कस्टमाइजेशन वो चीज है जो कि कस्टमाइजेशन जरूरी है। अगर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप एड्रेस करना चाहते हैं तो हम आपको कुछ सिखाते हैं, एक सिंपल मॉड्यूल सिखा के फिर उसको पूरा का पूरा कस्टमाइज कर देते हैं आपकी प्रॉब्लम की तरफ में। ये जरूरी है। इसीलिए कैन यू कम आउट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस? यस, यू कैन कम आउट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, Chandan Mondal sir talks about C5, C6 disc prolapse. Can Kumbhak help? अभी मैंने बताया आपको डिस्क प्रोलैप्स होने का कुछ रीजन। अब मैं और दूसरा रीजन बताता हूं। तो डिस्क प्रोलैप्स क्यों हो रहा है? सो इफ यू टेक फ्लैट स्टोन्स, राउंड फ्लैट स्टोन्स, 33 स्टोन्स ले लीजिए, उसके बीच में ड्रिल करके छेद करो, रस्सी से सबको एक साथ इकट्ठा करो। रस्सी को आप ऊपर नीचे से खींचेंगे तो सारे 33 स्टोन से अलाइन हो जाएंगे। तो अलाइनमेंट ऑफ स्टोन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्टोन इटसेल्फ, बट द स्ट्रेंथ, द स्ट्रेच, द टेंशन इन द रोप विद इन। ऐसा ही आपका रीढ़ का हड्डी है। तो रीढ़ के हड्डी में स्लिप डिस्क क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो टेंशन है रीढ़ के हड्डी का, जिसको हम उदाना फैक्टर कहते हैं, ये उदाना फैक्टर जो है वो वीक हो गया। ठीक है, उदाना फैक्टर वीक सभी का ही हो रहा है। आप एक और चीज देखिए कि जो पक्षी बहुत दूर से ट्रैवल करके एक दूसरी जगह जाके ब्रीडिंग करते थे, आजकल वो पक्षी बहुत कम हो गए। ड्रैगन फ्लाई, छोटा सा हेलीकॉप्टर ड्रैगन फ्लाई, वो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया से ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका तक चला जाता है ब्रीडिंग करने के लिए, लेकिन आजकल जा नहीं पा रहे। दे आर लूजिंग डायरेक्शन। व्हाई दे आर लूजिंग डायरेक्शन? क्योंकि उदाना फैक्टर विच कीप्स यू अपराइट, जो आपको सीधा रखता है, अगर वो फैक्टर कम हो जाए तो आपको मालूम है कि डिजीनेस होने लग जाएगा, दिशाहीनता होने लग जाती है। तो जो अपराइट रखता है, आपको सीधा खड़ा करके रखता है, आपकी रीढ़ की हड्डी का स्ट्रेंथ बना के रखता है, उसे उदाना फैक्टर कहते हैं। अगर आपको स्लिप डिस्क हो रहा है, इसका मतलब वो वीक है, तो स्लिप डिस्क एक दूसरे के ऊपर खिसक रहे हैं, उनका जो टेंशन है वो प्रॉपर नहीं है। कोई भी सर्जरी, कोई भी मेडिसिन वो उदाना फैक्टर को बढ़ा नहीं सकता। तो उदाना फैक्टर को बढ़ाने के लिए वो, क्योंकि आपके बॉडी का फंडामेंटल स्ट्रेंथ है, तो 84 स्ट्रेंथ्स आपको मैंने बात किया, 84 फंडामेंटल फोर्सेस, उसमें से एक या कुछ ग्रुप जो है वो उदाना कहलाता है। तो उदाना कुंभक से ठीक होगा, इसको कुंभक से ठीक करते हैं। उदाना के लिए कुंभक का फॉर्मूला है
जो कि हमने अपने प्रोग्राम में एनीवे डाला ही हुआ है। दूसरा फैक्टर जो है रीढ़ की हड्डी को लेके, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी क्रिएटिंग फोर्स, जिसको हम समान कहते हैं, समान बल, जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मैनेज करता है। अगेन इट्स अ ग्रुप ऑफ 84 फोर्सेस अमंग द 84 फोर्सेस, and there is a special formula of Kumbhak for improving that. Anyway, a very basic kind of samana, a basic kind of samana has been integrated in the module itself. तो अगर आप कुंभक करना शुरू करते हैं तो ये दोनों चीज जैसे ही आप बढ़ाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा रीढ़ की हड्डी के अंदर की प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर पाएंगे, दोबारा से स्लिप डिस्क नहीं होगा। तो अगर आपको स्लिप डिस्क हो गया है, क्या सर्जरी के लिए जाना चाहिए? मैं कहूंगा अगर बहुत प्रॉब्लम है तो जाइए, नहीं है तो थोड़ा टाइम दे दें अपने शरीर को, ये उसको ठीक कर लेगा। और Okay, the next question is from, 1 minute. Very recently, okay, Meher ma'am talks about drop foot. Can drop foot be cured? बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। वी हैव केसेस, वी हैव एविडेंसेस, वी हैव टेस्टिमोनियल्स ऑफ पीपल हु हैव कम आउट ऑफ ड्रॉप फुट। ड्रॉप फुट को और भी आसानी से अगर मैं आपको समझा दूं, तो आपका किसी लिम्ब पे कंट्रोल अगर नहीं हो रहा है, तो उस कंट्रोलिंग फैक्टर को अगर आप वापस लेके आते, क्या है कंट्रोलिंग फैक्टर? आप कंट्रोल कैसे करते हैं किसी चीज को? रस्सा कस्सी अगर खेले हैं तो किसी को खींच रहे हैं तो कैसे खींचते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ एंड देन पुल। द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ योर ब्रेथ एक्चुअली विल डिसाइड हाउ मच यू कैन पुल। आपका पुलिंग फोर्स कितना है, ये कंट्रोलिंग फोर्स कितना है आपका। तो एनीवे कुंभक इज दैट एस्पेक्ट। कुंभक करेंगे ये चीज ठीक हो जाएगी, बड़ी आसानी से ठीक हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा एक और चीज मैं बता दूं, कभी कभी ड्रॉप फुट दोनों फुट में नहीं होता, एक फुट में होता है, या एक तरफ में प्रॉब्लम होती है। तो आपकी बॉडी को अलाइनमेंट चाहिए, 3 तरीके का अलाइनमेंट चाहिए आपके बॉडी को, नाभि, कौड़ी, नले, नेवल, मिडल ऑफ चेस्ट एंड इनर थाई। ये 3 चीज अगर आप अलाइन करेंगे तो मैक्सिमम, जैसे कहते हैं ना कि एक्सटर्नल इशू रिलेटेड टू एक्सटर्नल यूजेबिलिटी ऑफ योर लिम्ब, हाथ पांव को इस्तेमाल करने की क्षमता, या एक तरफ में प्रॉब्लम है दूसरी तरफ में कम प्रॉब्लम है, वो रिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट। Okay, Mohammed sir talks about burning, micturition, pain, abdomen, prostate 36 gram, PSA test normal. देखो ये मैं पहले ही ले चुका हूं। द थर्मो रेगुलेटरी फैक्टर, इसको आयुर्वेद में कहते हैं पित्त प्रकोप, है ना, पित्त वात प्रकोप। कई में ये तीनों होता, पित्त कफ भी हो सकता है, पित्त वात कफ भी हो सकता है। सो वी कैन डिसाइड इट लुकिंग एट यू। आपको डायग्नोस करेंगे तो हम पता लगा सकते हैं कौन सा प्रकोप है, और उसके बाद में आपको दे सकते हैं। देखिए ये वैसे भी आप देखिए, आपको मैं और भी सिंपल बता दूं, अगर शरीर को ठंडा भी कर लेना तो आप देखेंगे कि ये इशू ठीक हो जाएगा। बट प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को ठीक करने के लिए आपको उसको वापस खींचना पड़ेगा ना। सो देयर इज अ स्पेशल प्रोसेस ऑफ कुंभक दैट यू नीड टू डू। हाँ, हीट वाला जो फैक्टर है ना, उसको आप ठंडा कर लें शरीर को, कॉन्स्टिपेशन अगर आप रिलीव कर दें, देन हाइड्रेट करें बॉडी को, और उसके बाद उल्टा अगर पाँव ऊपर और सिर नीचे करके थोड़ी देर लेटेंगे ना, 20-25 मिनट के आसपास में, तो आप देखेंगे शरीर थोड़ा ठंडा हो जाता है, और ये चीज कम हो जाएगी आपके शरीर के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी ऑफ द केस। आई एम टेलिंग यू द वेरी जेनरिक प्रोसेस, और जेनरिक सी बातें बता रहा हूं। पेठे का जूस सुबह सुबह पीना शुरू कर दिया, उससे भी बर्निंग मिक्सचरेशन। पेठा जो सफेद पेठा होता है, जिसका कि मुरब्बा या पेठा बनता है, उसका जूस पीना शुरू कर दें, या इस तरीके का कोई ठंडी चीज है। मगर आपको जेनेरिक बात बता रहा हूं, आपको डायग्नोस करके हम कुछ स्पेसिफिक भी आपको प्रोसेस दे सकते हैं, वो तो डायग्नोसिस के बाद ही पता चलेगा। तो इससे हीट और दो टेक्निकल टर्म्स में बोलूं, थर्मो रेगुलेटरी फैक्टर आपके शरीर का कमजोर है, उसको ठीक करना पड़ेगा। नेक्स्ट। Can we have the questions from the participants? Anybody who wants to ask their questions can do so.
Anybody from the participants? Okay, Anuradha, Jai mic Shri should Krishna. come. जय श्री कृष्णा, बोलिए। जय श्री कृष्ण। यस, आई वुड लाइक टू, मतलब मुझे ये मतलब थाई में काफी 2 साल से पेन है, मतलब साइड ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द थाई। और वैसे मतलब सोने में ज्यादा होता है एंड चलने में भी होता है। आई हैव डन आइस पैक एंड ऑल एवरीथिंग, बट आई हैवंट बीन टेकिंग एनी मेडिसिन। And some said like I should start taking the calcium and all this, but I haven't started yet. So I don't know whether. हाँ, even if you start taking calcium, will it help or not? ऐसा कुछ एविडेंस नहीं है जो कि आपको इसमें हेल्प मिलेगा। दूसरी बात ये है कि थाई में अगर आपको पेन हो रहा है तो इसका कारण जो है ना वो आपकी कमर के साथ में जुड़ा हुआ है या लोअर पार्ट ऑफ योर स्पाइन के साथ में जुड़ा हुआ है। थोड़ा अगर उसको अलाइन करेंगे, अपने राइट एंड लेफ्ट साइड को अगर आप अलाइन करते हैं एंड यू स्ट्रेंथन द लोअर पार्ट ऑफ योर स्पाइन, अगर उसको स्ट्रेंथ क्रिएट करेंगे तो ये चीज चली जाएगी, बट उसके लिए तो आपको बॉडी पे काम करना पड़ेगा। Okay, but I have been doing exercise, yoga and walking also, but then I don't know, it's still there, it's not like 100% it's gone, but still I'm having, yeah. See, exercise might aggravate the condition if you push yourself too hard. Yoga की जहाँ तक बात है, yoga has been, मतलब now yoga is used as a therapy, but fundamentally yoga was never designed for a therapy. Yoga was always designed for samadhi, mukti, moksha, enlightenment, self-realization, nirvana, kaivalya, these kind of things. Pick up any yoga yoga book and you'll see it will lead you to that place. But because there is a body movement involved, so it has been used as an exercise, but never been It's not a designed permanent for. policy. Yes. So that is why some precision treatment is required. So we also use body movements. We also use mudras with a breath hold formula, which will help much more in these kind of things. Yeah. Okay. Thank you so much. Yes, Hello. Anuradha, ma'am. हेलो Anji. हेलो। हाँ जी एक्चुअली एक करके बोलिए। Anuradha, ma'am, you can ask your question. yeah Hello. I just wanted to ask hello बोलिए Yes, बोलिए ma'am, बोलिए। you're audible. हाँ actually my husband is having this problem of trigeminal neuralgia last 3 years से and he's been trying a lot of treatments, not allopathy, but he's tried with Ayurvedic, and now he's doing this salt balance therapy and all that. He's trying a lot, but homeopathy also, but it doesn't help. It goes for some time, but then it comes back. And even if you go for a surgery, you never know that it's going to be successful or not. So he's totally ruled out against surgery. See what surgery will basically do. Surgery cannot cure trigeminal neuralgia. Surgery is to cut Yeah, off the yeah. sensation. Yeah, Surgery is basically to cut off the sensation, which yeah. is not a good thing to do. So trigeminal neuralgia, as I said before, it can only be cured if you do some kind of a neuro regenerative process. If the nervous system gets regenerated, and apart from that, we use a method called Anganyasa. In Anganyasa, there are certain points in your face. Applying a pressure on those points, we try to create or activate the neuro regenerative process and also regulate the sensation flow, because these nerves carry sensation from your face to the brain. Yeah. So we try to regulate that sensation flow on your face. I mean, he gets a continuous sensation in his upper jaw on the left side that जैसे कोई current लग रहा है continuous. हाँ, He gets that sensation. वो इसीलिए है ना कि जो अपर पार्ट ऑफ नर्व है वो डिजेनरेट हो गया, तो वो बहुत ज्यादा उसको सेंसिटिव हो गया. बॉडी इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. बॉडी बोल रहा है कि ये प्रॉब्लम है एंड इट इज क्रिएटिंग दैट पेन.
पेन तो आपके बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है. पेन का मतलब है देयर इज सम डीजेनरेशन एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. बट हाउ Like the विल यू टेक MRI केयर ऑफ report shows. Yeah. So will Kumbhak help in this? Yes, Kumbhak will help in this. But it will take some time because neuro regeneration takes time. Relief will happen. Relief will happen fast, but the whole thing to go off will take some time. Is there any other methodology through which it can be done? I don't know any other. One thing which can actually manage it to a certain extent, not, I don't know if it will create regeneration or not, because we are working holistically upon the body. We are also improving the metabolic health. We are also improving the cardiometabolic health. Thereby, the regeneration will actually get activated. Not only that, the stem cells will get activated. So Kumbhak is a new epigenetic trigger of your body. Because only when your stem cells get activated, you'll see the whole nervous system and the brain will regenerate. So this in modern terminology is called as neuroplasticity. We are doing that actually. But it will take some time to completely come out of that. There is also one more thing that you can try. I can suggest that it is acupuncture. Acupuncture. If you not pressure. find, not pressure, not acupressure, acupuncture. So that is something that may help in this condition, but will it activate the regenerative process? That is a question mark. But Kumbhak will definitely activate the regeneration. Because his MRI report shows that some artery or some nerve has, two nerves have entwined itself. Mane वापस में some it's covering it or something. So that sends the shock sensation. नहीं देखो वो न्यूरालजिया फिर उससे नहीं होगा. न्यूरालजिया नहीं होगा. The MRI reports are confirming it's एंटवाइंड है तो उसको रिलीज हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा. बट इफ देयर इज अ न्यूरो डिजेनरेशन देन ओनली न्यूरालजिया विल हैपन. है ना. देखो एंटवाइंड है तो वो ठीक है, उसको खोल दो तो ठीक हो जाएगा. वो तो वैसे भी खुल जाएगा दोनों साइड से. अगर पता है किस पॉइंट पे है तो अपर और लोअर पार्ट में अगर आप प्रेस करेंगे तो वो वैसे ही ठीक हो जाएगा. इन आर अंगन्यासा दैट इज व्हाट वी डू. वी यूज सर्टेन प्रेशर ऑन द जॉ. जॉ पे हम एक प्रेशर और ब्रेथ होल्ड के साथ में करवाते हैं. अगर एंटवाइंड होगा तो वो खुल जाएगा. वो वैसे भी अगर आप खोल देंगे, अगर केवल एंटवाइंड है तो खोल के देख लीजिए, इसको खुलवा के देख लीजिए. देयर ऑपरेशन कैन ऑल्सो हेल्प. ऑपरेट करके भी वो हेल्प हो सकता है. बट ऑपरेशन उसके लिए ऑपरेशन में भी रिस्की. ऑपरेशन में maybe it will cause some facial paralysis or something. It may result in that. It's always risky on the upper part of the body. It's always risky because everything is directly connected to the hypothalamus and brain. So, no, they'll be doing it through the brain. They'll be doing it in the brain. The brain, then it's too risky. Yeah. Then it's too That risky. is the whole thing. So why not give a chance? Why not give a chance in alternate ways? क्योंकि इससे ठीक हो सकता. और कोई पूछना चाह रहे थे? Mamta Singh, ma'am, you can unmute and ask. Hello. 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 हाँ जी ममता जी बोलिए. Namaste Guruji. नमस्ते. Now I have actually been caught in a vicious circle of weight and osteoarthritis. Osteoarthritis is somewhere, it is restricting my mobility, sir. और उसकी वजह से weight बढ़ रहा है. अब I have been attending lot of online yoga sessions करने की कोशिश करती हूँ, but then I land up into something जो मैं नहीं कर सकती और वो program का हिस्सा होता है, तो it becomes difficult. I have just no idea about the Kumbhak Gyan you are giving, sir. So I just want to know if I register myself, will it include some yogic exercises which are not suitable yet? I won't be able to do and I'll have to leave it. There are three things that this model contains. The first one is called as Anganyasa. The second one is Kumbhak therapy. And the third one is Marma Vinyasa. So first one and the second one, you can do sitting. You
you can do sitting, you don't have to move your body. So people who are unable to move their body, we recommend them, you start with Kumbhak therapy, which doesn't require any movement. Then you go to Anganyasa, which requires simple movement, like pressure on the body, applying pressure on the body. Then once your body allows to move and it becomes better, then you can go for the third part, which is Marma Vinyasa, where you have to bend your body in a certain position and then do a particular breathing. Right? That you can pick up when your body becomes better, starts moving. Then you can start the last part, which is Marma Vinyasa. So the first one is very, very essential, which is Kumbhak therapy, which doesn't need any kind of a movement. Sitting on a chair, you can easily do that. आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं. It will create strength factors in the body. It will improve the organ function, the metabolic factor, and many other things. And then you'll see you will be able to do Anganyasa, which is again not a too much movement. Sitting, you can do that process. Once you gain that kind of a strength in your body, then you can do Marma Vinyasa, which is a very powerful thing. But not everyone will be able to do if they are not able to move their body. Even though the postures or the movement are simple, but this is how you can go through the program. Thank you, Swamiji. Thank you. विपुल जी आप कुछ बोल रहे थे. हेलो हाँ जी बोलिए. हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए. Actually, I am 83 years of age. Mm-hmm. Usually, I take some physical exercises in the morning. Mm-hmm. I've got a breathing problem. After say 35 or 40 minutes of exercise, I became exhausted. Mm-hmm. That is number one problem. I underwent one scalp operation in 2017 for the sidereal hematoma. Mm. I have got cervical and lumbar spondylosis, Mm-hmm. knee joint pain, shoulder pain, and wrist pain. Very recently, I have diagnosed as hernia. Mm. Whether these problems can be addressed by joining this course or this Kumbhak, all this will help. Yeah, this Kumbhak is designed for these kind of problems. So when we say Ashtanga Chikitsa, neuromusculoskeletal disorder. Now this doesn't just only addresses neuromusculoskeletal disorder, but those factors which create neuromusculoskeletal system. So as I said, cardiometabolic health or rhythm, if it gets disturbed, then you will start facing issue of breathlessness. So if you improve, as I explained before also, there is that strength is known as Dakshina Bala. If you improve the Dakshina Bala, you'll see that you will not feel breathlessness after doing not only 30 minutes, even more of the exercise that you are doing. Apart from that, see, exercise is a load on system if your organs are weak. Right? If your metabolism is weak, your hunger factor is not fine, your metabolism is not fine, your digestion or absorption factor is not fine. So what happens? Putting load on the body will be very, very difficult. And that is why, even if you want to put load on the body, first ensure that your internal system is resilient and more functional. Even whatever age, we have people of more age who have improved their condition by doing Kumbhak. So will Kumbhak help? Definitely it will help in all your condition. In fact, going ahead in your life, you will see a drastic improvement in the quality of your life.
Thank right? So you. this is designed for this kind of problem. Okay. Got it. Sir, Right. We can take one Thank you. last question. We can take Sir, one sir, last. Ritu yes. Arora. Yes, yes, yes. सर मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या मेरे को सब समझ आ रहा है, थोड़ा धीरे धीरे समझ आएंगी बातें, हाँ। क्योंकि हम लोग को भी ये वर्ड्स पकड़ने में टाइम लगता है, तो मेरे को समझ आ रहा है काफी कुछ, लेकिन मैं ही समझना चाहती हूँ क्या ये 9 वीक्स में ही मैं पूरा कर पाऊंगी या इसके लिए प्रोग्राम 1, 2, 3 ऐसा कंटिन्यू करना पड़ेगा? 9 वीक्स के अंदर जो मॉड्यूल आप सीखेंगे वो आप सीख जाएंगे, तो आप उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। केवल उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 1, 2, 3 लेवल कुछ भी नहीं है। वो पूरा का पूरा मॉड्यूल सीखने में 9 हफ्ते लगेंगे जी, राइट। जब आप सीख जाएंगे उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो जी। हम ये देखते हैं कि जब प्रैक्टिस शुरू करेंगे 9 हफ्ते तो सीखने में लग जाएंगे। आपको प्रैक्टिस तो करेंगे ही, सीखने में पूरा सीखने में लगता है। 9 हफ्ते के बाद में फुल मॉड्यूल प्रैक्टिस करना आप शुरू करेंगे जी। वहां से आप जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि एकदम से आपको फायदा बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीजों से निकल के आएंगे। ऐसा भी होता है, मैं और भी आगे बता रहा हूँ, ऐसा होता है लोग प्रैक्टिस करते हैं 1, 2 महीना 3 महीना प्रैक्टिस करते हैं, कहते हैं तो मैं तो अब ठीक हो गई या ठीक हो गया, तो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। तो फिर क्या होता है कि 6 महीने साल भर के अंदर वापस उनको प्रॉब्लम जब आनी शुरू होती है तो हमसे बात करते हैं, कहते हैं कि वो हमको बड़ा फायदा हुआ, उसके बाद फिर हमने छोड़ दिया। तो हम कहते हैं आपने सीख तो लिया ही है मॉड्यूल, दोबारा से शुरू कर दीजिए। तो ये वो चीज है जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ में रहेगी। जी, वो मैं आपको बिल्कुल एग्री करती हूँ सर, लेकिन जी गुरुजी मैं ये और समझना चाहती हूँ कि थोड़ा सा कहीं फोन नंबर ऐसा मिले जो हम अपने मन की थोड़ी सी चीजों को और निकाल सकें, उनसे पूछ सकें, फिर हम ज्वाइन कर लें थोड़ा तो सा। आपसे तो कोई ना कोई बात करेगा ही। आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, आपसे स्पेशली भी अगर ऐसी बात है तो आपसे कोई ना कोई बात जरूर करेगा ही। उसके बाद आप कर लीजिए क्या है। जी, आपको देख के और आपकी बातों से बहुत मैं इम्प्रेस हुई हूँ। मैं भी बचपन से योगा भी करा है, सब कुछ करा है, और मैं फिजियोथेरेपी कर रही हूँ अभी अपने लिए, लेकिन ठीक नहीं हो पाती हूँ। लेकिन आज पता नहीं किस तरह से वो एक वेबिनार फ्री करके मैंने भी ज्वाइन करा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि, और मैं लास्ट तक आपसे जुड़ी रही। तो मैं आपका पहले तहे दिल से आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने अच्छे से समझाया, और फ्री तो सही बात है, फ्री तो इतने लोग लगे हैं, उसके लिए उन लोग के लिए आपको अरेंज करना है, सब करना है, फ्री हम नहीं चाहते। लेकिन जी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद जी। इसके साथ ही आप लोग आए, सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने तरीके से प्रॉब्लम्स को अपनी समझ में लेके आए। कोई बड़े ग्रीको रोमन शब्द बोल देते हैं, कुछ ऐसी भाषा बोल देते हैं जो हमें लगता है कि ये कुछ अच्छी बात कर रहे हैं, मगर क्या है, आप एविडेंसेस देखिए पिछले 50 सालों में कौन सी बीमारी कम हुई। तो एविडेंस अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी तो बीमारी कम नहीं हो रही, सभी बढ़ रही है। तो जरूरी है कि हम लोग समझें कि ये कैसे काम, हमारा शरीर कैसे काम करता है, हमारी लाइफ कैसे काम करती है। शरीर को क्रिमिनल ना बनाए। हाँ, तो ये समझ के उसके बाद सही स्टेप लेंगे तो अपनी ही हेल्प नहीं करेंगे, आने वाली जनरेशन की भी हेल्प करेंगे। ये जरूरी है। सो आप लोगों का जीवन स्वस्थ हो, सुखमय हो और बहुत वैभवशाली हो, इसी मनोकामना के साथ में we'll end this webinar. Thank you so much, Swamiji, and to all the participants who have waited till the last. So we've tried to take as many questions as possible. अगर आपके और भी कोई questions हैं, please feel free to write in the webinar group and it will be answered shortly. Good night. Thank you so much. Stay well, stay happy. Signing off, Rachna Bose.